मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो लोग फोमो को फेस कर रहे होते हैं या फिर फोमो के साथ में होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में इंटरनली क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहला ये होता है कि उन लोगों ने जिंदगी में कभी कोई चीजों को मैनेज नहीं किया होता है, मर्ज नहीं किया होता। उसको ये नहीं पता उसकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या अर्जेंट है, क्या अर्जेंट नहीं है, क्या इमरजेंसी है, क्या इमरजेंसी नहीं है। अगर अपना वो इंपॉर्टेंट, अर्जेंट और इमरजेंसी तीनों चीजों को अपनी जिंदगी में मैनेज करते तो शायद फोमो उसको कभी भी कोई भी तरह का इफेक्ट नहीं पहुंचाता। To understand the concept of FOMO in regards to social media, we need to focus at each and every aspect of our society which is constantly engaging online and all the people who have made social media an integral part of their lives. So, let's look at FOMO through the perspective of different people from various age groups and dimensions, which will help us get a close look at the concept and its real life impact. पहला क्वेश्चन ये है, जैसे हमारे दोस्त घूमने जाएं और हमें ना लेके जाएं तो हमें बुरा फील तो होता है ना। हाँ। आपके पास आपका पर्सनल फोन है नहीं। और आपके दोस्तों के पास हाँ है। कितने दोस्तों के पास होगा? 2-3। ओके, तो आप फोन वगैरह का काम तो आपको पड़ता होगा। हाँ। किसके फोन यूज करते हैं आप घर में? अपनी मदर का। अच्छा, आप सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज करते हैं? हाँ। कौन कौन से? यूट्यूब, व्हाट्सएप और स्नैपचैट। ओके, इंस्टा वगैरह? नहीं। क्यों? पेरेंट्स अलाउड नहीं करते। क्यों? आई डोंट नो। ओके, तो आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हैं इस वक्त, आप अपने दोस्तों से कांटेक्ट में हैं उसमें? हाँ। कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हैं आप उसके लिए? यूट्यूब तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। व्हाट्सएप और व्हाट्सएप और स्नैपचैट, ठीक है। आपको इनमें डिफरेंस पता चलता है आपस में? क्या मतलब? Snapchat। अच्छा, आप स्नैपचैट से क्या करते हैं? स्नैपचैट से हम पिक्चर वगैरह क्लिक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स वगैरह से हम चैटिंग कर सकते हैं। ओके, और व्हाट्सएप से? और व्हाट्सएप से भी फ्रेंड्स वगैरह से चैटिंग कर सकते हैं। और यूट्यूब से? यूट्यूब से हम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है शॉर्ट्स आजकल, तो हम वो देख सकते हैं वीडियोस और एजुकेशनल लेक्चर्स पे। ओके, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपका पर्सनल फोन हो, क्यों? क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है तो उसकी वजह से शूटिंग के लिए चाहिए होता है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मान लो आप अंदाजन कितना टाइम यूज करते होंगे अपना सोशल मीडिया पे पूरे दिन का? 1 आवर। 1 आवर सारे अकाउंट्स को मिला के? 1 या 2 आवर। हाँ। ठीक है। स्कूल किस टाइम? स्कूल से आने के बाद? हाँ। ठीक है। और अगर मान लो हमने ना आपको एक दिन दिया, कोई रूल्स रेगुलेशंस आपको कुछ नहीं है, तो उस दिन क्या करोगे आप? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाऊंगी। कहाँ? अभी तो फाइनल नहीं है। ओके, अच्छा। आपको पता है ट्रेंडिंग में आजकल क्या चल रहा है और कहाँ से पता चलता है आपको? यूट्यूब से ही। अच्छा, क्या चल रहा है? मोए मोए और एल्विश यादव और सो ब्यूटीफुल। ओके, सो वाली। ओके। फोमो आपने सुना है? फोमो क्या होता है? मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या आपको क्या लगता है इससे क्या होगा, इसका मीनिंग वगैरह? लाइक यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, अलग अलग ट्रेंडिंग में आते रहते हैं, तो अगर हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं तो हम उसे मिस कर रहे हैं उन चीजों को, और हमारे फ्रेंड्स सब उसे एंजॉय कर रहे हैं। कई बार हमने ये चीज भी आपने फील करी होगी, जैसे आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो आपके कुछ दोस्त यूज करते हैं इंस्टाग्राम, तो उन्हें कुछ फीचर्स पता होंगे या फिर उन्हें वहाँ जो इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंड में चल रहा है वो चीज शायद आपको ना पसंद है, तो वो गैप बन जाता होगा कि आप वो चीज नहीं समझ पा रहे। और पिकनिक वगैरह पे भी आप एग्जाम्पल अप्लाई कर सकते हो। जैसे मतलब आपको ये लगता होगा अगर सारे दोस्त पिकनिक पे गए, वही सेम जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि सारे दोस्त घूमने गए, आप नहीं गए, तो हमें बुरा लगेगा और उन्होंने एंजॉय क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तो वो हमें लगता है ना वो आके बताएंगे कि क्या करा क्या नहीं करा, तो मिस हो जाती है वो चीजें। चलो बच्चे, मुझे यही क्वेश्चंस पूछने थे आपसे। थैंक यू फॉर योर टाइम। आपका नाम क्या है? मैंने क्या? आप जैसे इंस्टाग्राम या स्नैपचैट ऐसे इसमें नहीं है ना। क्यों? अच्छा लगता है? नहीं, बोर हो रहा है। डांस वाले तो बोर हो रहे हैं। इंस्टाग्राम से बोर हो जाते हैं? अच्छा, तो मतलब सारे ऐसे ही है। तो आपके दोस्त भी है मतलब यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह? उन्हें अच्छा लगता है, तो मतलब उसमें आपको बोरिंग क्यों लगता है वो? नहीं, अगर आप किसी से इतना कोई मेरा उसमें दोस्त नहीं है। अच्छा, आपको फोमो वर्ड का मतलब पता है? नहीं। अच्छा, आपने कभी इसके बारे में सुना है कभी किसी के मुँह? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। फोमो का फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आपको लगेगा कि आप अपने दोस्त को या फैमिली या सोसाइटी में आप जहाँ पे भी रह रहे हैं कुछ कटा सा, यानी कि आप उनके साथ मिस आउट फील करेंगे कि अगर वो साथ में जा, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि आपके दोस्त खेलने जा रहे हैं आपको छोड़ गए, तो इस टाइप के आपको अलग अलग लगेगा कि मैं अपने दोस्तों से थोड़ा सा बिछड़ा फील कर रहा हूँ। तो आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको जैसे सोशल मीडिया में या फिर वैसे लाइफ में कभी ऐसे फोमो फील हुआ है? नहीं। या फैमिली के साथ सब अच्छा चल रहा है? ओके, थैंक यू। Hi Shrestha. Have you ever done something just because someone else posted on the same on the social media? Yeah, I think I have done a lot of things that someone else posted on social media because
currently we are living in a phase where trend becomes a lot of things. Trend is something that everybody look forward to. And during COVID, I think we all did a lot of things in general that someone else did it, and we also want to become a part of that trend. So Yeah, we see the Dalgona coffee trend. Okay, so my next question is, do you feel FOMO is hampering you in your studies? yeah, I think FOMO does hamper me on my studies, because whenever I open any social media platform, especially LinkedIn, I just feel like I have not done anything apart from just studies. And in order to pace up with other things in general, I hamper my studies. Do you feel FOMO causes depression? And if yes, then how can we overcome this? I also feel that FOMO does causes depression, because when I'm just focusing on studies, or whenever I focus on something other in general, like in terms, I enrolled myself in a lot of certifications, which I not actually learned from it, but I just did it because I wanted some certificate out of it. And that was because I was inherently depressed in general by looking into others people and what all things they have done in general. So, yeah. So LinkedIn forces you to do the courses, right? Okay. When FOMO hampers you during your studies, then do you feel guilty, and do you do something about it? Yeah, I do feel guilty. Like every day, it's just a cycle that happens every day. Like whenever I wake up early in the morning, I just feel like, or just procrastinate that I'll do these things in general. But by the end of the day, I'm so exhausted and depressed by looking into others people, what all things they have achieved and I have not. I just feel guilty, as in I could have done a lot of things, but I did not do it today, and this cycle just continues for a couple of months or a year in general. Hi Shivam. So my question is, do you feel most of your friends are living a better life than you? Of course, like when we are on social media, like दूसरों का जिंदगी तो of course looks better. I believe कि जो दूसरों की लाइफ के बेस्ट स्निपेट्स जब हम देखते हैं ना, और वो सबकॉन्शियसली हम अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं, तो दूसरों की लाइफ हमेशा बेटर ही लगती है. ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने. So which social media platform do you use? How frequently do you use them? Or rather, how frequently do you check your phone only to see if there are any notifications or not? ओके, सो पर्सनली मैं व्हाट्सएप और लिंक्डइन का सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ. लिंक्डइन ऑफ कोर्स आजकल नीड बन चुकी है. एंड व्हाट्सएप में यू गेट दिस हाई, जब भी एक मैसेज आता है यू गेट दिस टिंग ऑन योर फोन. तो जो अर्ज होती है उसको निकाल के चेक करने की, रिप्लाई करने की, मीम देखने की, इट्स लाइक ओवरवेलमिंग. So how this FOMO of social media impacts your real life? My real life, I believe कि at some times it leads us to self-rejecting ourselves. That is to say कि when we are like seeing people at their very best, we just compare ourselves with them. Is the FOMO of social media is creating barrier in your real life? In my real life, again, when you self-reject yourself, then you don't feel confident enough to take opportunities. So if you can like believe that these people, this is not their real life, but the very best portrayal of their real lives, if you can make yourself understand that, then I think the barriers which social media creates in your life can be minimized. Is the क्या FOMO आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू सर्टेन लाइफस्टाइल और ट्रेंड व्हाटएवर इज गोइंग ऑन ड्यू टू सोशल मीडिया? होता है. कैसे आप डिस्क्राइब करोगे इस चीज को? क्योंकि हमने भी मतलब काफ़ी ज़्यादा देखा होगा कि यार हमारे कितने सारे फ्रेंड्स रहते हैं तो काफ़ी अपना टाइम वो सोशल मीडिया पर स्पेंड कर रहे होते हैं. इनफैक्ट मुझे लगता है कि देख मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, पर मुझे डेफिनेटली लगता है कि मेरा आधा ज़्यादा कंपटीशन यहीं पर ही खत्म हो रहा है, क्योंकि लोग बाग सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, अपनी पढ़ाई को भूल जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट काम है उनको भूल जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं देख सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए तो ये बात अच्छी है अगर मैं पर्सनल व्यू में लेके चलूँ. बाकी मुझे लगता है कि वाकई में कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ का प्रेशर भी ले रहे हैं खुद के ऊपर कि उनको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है. सो आपको क्या लगता है कि ये क्या ट्रेंड गोइंग ऑन चल रहा है? ऐसा क्यों सीख कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे? क्यों वैलिडेशन कहीं सीख ना कर रहे हैं? कहीं मेरे ख्याल से देयर इज अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, आई बिलीव सो. तो मुझे लगता है कि लोग बागों को ये चीज़ है उनके अंदर कि कहीं वो पीछे ना छूट जाए इस ट्रेंड में. तो सोशल मीडिया पे होना भी, वहाँ पे कंटेंट डालना भी इज इट सेल्फ अ ट्रेंड. जितने भी ट्रेंड्स और ये लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है ड्यू टू सोशल मीडिया, तो व्हाट इज योर स्टांस बीइंग अ लाइक यूपीएससी एस्पिरेंट? लाइक व्हाट इज योर स्टैंड एंड व्हाट डू यू डील विद? सोशल मीडिया 2 साल से बंद है, तो मेरे इतना ज़्यादा अभी
मैं इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं सोशल तो मीडिया आप 2 साल से सोशल मीडिया पे अभी नहीं आए हो, तो आपको सोशल मीडिया ऐसे sense of- इंस्टाग्राम फेसबुक मैं ट्विटर पे हूँ, मैं व्हाट्सएप पे हूँ, पर अभी ये सब चीजें बंद है। तो डाइवर्जन ऑफ सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं फोमो क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे नहीं है आप, लेकिन व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो ऐसा लेकिन मैं लगता है सच कहूँ ना, ये लाइफ इतनी बढ़िया है ना, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने पिछले साल शायद 1 साल बाद मैंने वापस से इंस्टाग्राम एक बार चेक करा था, सिर्फ मैं इसे देखने के लिए कि मैं चेक करती हूँ। मैंने देखा सेम लाइफ है, सेम स्टोरीज पोस्ट हो रही है, खाने की, दिवाली फोटोज, ये दिए वाली सब चीज़, कुछ नहीं बदलता है सोशल मीडिया पर। लेकिन जैसे मैं उस लाइफ में फेज में गई ना, मतलब वापस से मैंने इंस्टाग्राम उठाया, सेम था। हमें लगता है कि अगर हम इंस्टाग्राम बंद कर देंगे तो भाई बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा। Okay, so can you tell me any instances by which you can relate that that person is in FOMO, or maybe how you can associate with the student mindset? Sure. Last week, one of my friends took a short trip to Kashmir, and now she is on a photo uploading spree on Instagram ever since she has returned from there. And to make matters worse, she is also using captions like "कश्मीर के फूलों से कौन प्यार नहीं करना चाहेगा." Wow. I mean, no offense to her, but you get my point. Such social media posts tend to instill the sense of FOMO within me. Exploring the perspective of our upcoming generation unveils the significance of understanding FOMO and gauging their adeptness in navigating the pressures imposed by social media. It is heartening to discover that these youngsters, while not immune to the digital sphere, exhibit a commendable ability to maintain a harmonious equilibrium in the face of social media's demands. The impact of social media on adults is profound, with many succumbing to the pervasive influence of FOMO. Social media has been evolving into a disruptive force, causing distress and complications in many lives. Is there a pressure to conform to a certain lifestyle or trend due to social media? And if there is, how do you handle it? I think there would be mixed views on this. Some people take up pressure, they follow certain trends, and yes, such kind of pressure usually exists in teenagers. But personally, if I talk about myself, I don't use social platforms usually. Yes, I'm active on Instagram, but that too I use it for a very short duration of my day, so I don't take this as a pressure. Yes, certain kind of pressure do comes through LinkedIn, where people are publishing their work. So yes, I handle it saying to myself that yes, my pace would be slow maybe, but yes, I'm doing it and I will accomplish the things by my speed. How can we leverage social media without worsening FOMO? People may not even be on these apps, and even if they are on these apps, they feel that they are addicted, or they can't stop using it. So for example, open communication about it among friends, among parents and children, among teachers and students will be useful. I feel that okay, let's acknowledge and accept that this is here, and let's not keep it in secrecy, that this is what I do and this is what I don't do. I think differently or I don't like it. Let's create conversations around it. That there should be some changes at the level of design of social media apps. For example, right now there's so much awareness among citizens, and especially younger citizens, that algorithms and other forms of design and architecture in social media apps are not really conducive to one's own well-being. So then it is also on the makers of these apps to come up with more child-centric and youth-centric design to make it more safe and more adaptable to users' environments. How has FOMO evolved with the change in social media over the years? First of all, FOMO, fear of missing out. It's a very term we started in early 2000s. So at that time, Orkut was there. Even when I started using social media, I started with Orkut, because there I found I can meet people from different spaces, different places, and also those friends जो शायद कहीं छूट गए थे क्योंकि स्कूल चेंज होते रहे, तो ये भी हुआ, तो आई मिस कि उनसे मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए. So there was a FOMO about it. Then came Facebook. So I started
मूविंग टूवर्ड्स डिफरेंट प्लेसेस ऑल्सो अगेन। फिर कहते हैं कितने और लोगों से बात हुई, पिथौरागढ़ के दोस्त हैं, कहीं के भी मेरी जगह के दोस्त हैं, इनसे कैसे मिलेंगे, रिलेटिव्स हो गए, तो ऐसे करके एक सोशल कनेक्शंस बनाने का हुआ। फिर धीरे धीरे एज यू ग्रो यू सी कि फिर चेंज आते हैं, फिर डिफरेंट इंस्टाग्राम आ गया, या फिर कहते हैं लिंक्डइन वगैरह, ये सब सोशल मीडिया है जहाँ पर आप अलग अलग किसी के अलग अचीवमेंट्स देखते हो। इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हो कोई घूमने जा रहा है, लिंक्डइन पे देख रहे हो आप कोई जॉब में कहीं अच्छा हो गया है, कहीं किसी का अच्छा पैकेज लग गया है, या किसी ने रिसर्च पेपर खासकर PhD दैट हैपेंस, या भी कॉन्फ्रेंस करना है, तो देयर इज़ अ फॉर्म ऑफ फोमो यू फाउंड देयर कि यार ये चीज़ मिस हो गई, कुछ और हो सकता था, ये इन्फॉर्मेशन शायद मेरे पास होती तो मैं कुछ और कर सकता, या फ्रेंड की शादी रह गई। तो ये सब चीज़ें हैं जो आती हैं, विद दिस थिंग्स हैव इवॉल्व्ड राइट नाउ। सो ऐसे इवोल्यूशन तो हुआ है विद टाइम। पेरेंट्स के जनरेशन में थोड़ा अलग है, बट उनके लिए भी एक है कि जब व्हाट्सएप वगैरह आया तो उन्हें भी एक इजी एक्सेस मिला, तो दे फाइंड कि कुछ रह रहा है, जैसे बेटा तू ये नहीं कर पाया, देखो उसकी शादी हो गई, देखो उसका कहते हैं उसका जॉब लग गई, तुम क्या कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन उनके भी आते हैं। तो फोमो का जो एक है वो डिफरेंट इवोल्यूशन सोशल मीडिया के साथ चेंजेस आए हैं, बट यस जितना ज़्यादा रीच बढ़ेगा उतना ज़्यादा फोमो भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा उसे यूज़ करना करेंगे फेसबुक या फिर सोशल मीडिया को। थैंक यू। How has social media influenced your perception of success and achievement? Success it's not about getting job, government job or secure job. Success का मतलब है कि खुद को खुशी कैसे रखें, है ना। हम लोग बहुत सारा एग्जांपल्स पे देखते हैं सोशल मीडिया में कि कई लोग UPSC क्रैक करके भी जॉब ज्वाइन नहीं करता है। How does FOMO vary with the generation experiencing it? ओके, जनरेशन के बारे में बात करूँ तो दे आर टू मच इन्वॉल्व इन द सोशल मीडिया, नॉट जस्ट योर लेजर वाइज, प्रोफेशनल वाइज ऑल्सो दे हैव लिंक्डइन प्लेटफॉर्म, एंड देन लेजर वाइज अगर बोलूँ दे हैव इंस्टाग्राम हो गया एंड फेसबुक हो गया। उसके वजह से दे आर इन्वॉल्व, नॉट ओनली इन्वॉल्व इन द लाइफ ऑफ पीपल हु दे नो, also those who they don't know, for example like the celebrities and influencer, and since there are so many people of the same age doing totally different things, have at different levels in their career path, so वो comparison आ ही जाता है कि ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। If 10 people are doing and they have succeeded but I have not, तो फिर वो feeling आ जाती है। और जितना ज़्यादा लोगों से आप compare करना start करोगे उतना ज़्यादा intensity उसकी बढ़ जाएगी। How has social media influenced your perception of success and achievement? Okay, जैसे कि लोग जो हैं अब जो नेम और फेम कमा रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया उसको सक्सेस देख रहे हैं, डिस्पाइट कि हम कितना अच्छा रिसर्च करें और उस रिसर्च से कितना पब्लिक इंटरेस्ट को हेल्प हो रहा है, बजाय वो होना चाहिए। तो लोगों का ना जो माइंडसेट है वो चेंज होता जा रहा है, वो दे जस्ट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में वो नेम एंड फेम को सक्सेस देखते जा रहे हैं, जो मेरे को मिला है अभी, डिस्पाइट जो उनका एक्चुअल जो ऑब्जेक्टिव है उस जॉब को बनाने का, उसको फुलफिल करने के बजाय वो उसको ऐसे देखते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों में चेंजेस अभी आ रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। Ramneek Singh, advocate, Supreme Court of India, and I'm having 20 years of standing at bar. Actually, I'll just explain FOMO. FOMO means fear of missing out. Due to the advancement of technology, the social media deeply affect our life rather than spending and time with the persons or individual. Due to this, new kind of a mental disorder develop, which now deeply affect our society. Due to FOMO, most of the youth suffers from sleep deprivation, anxiety, psychological issues are there, mental issues are there. So slowly and steadily they are moving towards cybercrime, and due to this the crime increases, number of various crimes are increasing day by day. So this is a big issue before the society. Due to this feeling they started doing illegal acts to fulfill their demands. So they indulge in cyber stalking, they indulge in NDPS activities, theft in respect of some kind of a new phenomena is developing. Cyber theft is there. So this deeply affect our society, and we as a part of a society is deeply affected, and the generation which is coming, they are moving towards crime, which is very much
which is very major factor for our society. So in my opinion, this should be checked. If it is not checked, time generation will be affected very badly. Thank you. In our exploration, it became evident that not everyone succumbs to the sway of social media or succumbs to the grief of FOMO. We encountered accomplished PhD scholars whose profound insights illuminated the subject, eloquently detailing their personal journeys of navigating such challenges. Their narratives painted a compelling picture of resilience, transforming adversity into a remarkable opportunity for personal growth and triumph. The pernicious influence of FOMO in precipitating social media crimes, underscoring the inherent risk associated with succumbing to the fear of missing out, has been highlighted by our respected advocate guest. The first question that have arisen is what type of characteristics does FOMO show and at what level does it start affecting an individual personality? Be into what you are doing 100%. Give your best to what you are doing and forget about the world about that. Then you can post it that you have done this, and so on and so forth, that people know about good things about you, what you have achieved in life. So, or if you want to invite people for some event, you can use social media. So you should know how much and to social media to be used and what should affect you and what should not affect you. Nothing should affect you which is external to you. So social media is not within you, it is outside you. So anything which is external to you should not affect you. Statistics, you study independent variable. Your personality, your life, your happiness, your joy should not be dependent on anything apart from you. Social media help to control the feeling of FOMO and especially considering the high generation gap. Generation gap is also self-created. You think that somebody who is having more age, say 20 years elder to you or more than that, is someone who cannot understand who you are and how do you behave and all that. मोदी जी की कितनी एज है? 70. He is touching 70. वो लगता है कि वो generation gap है कुछ जो है. The way he connects with people. So it's not the age which creates generation gap. We need to understand that. It's the mindset of ability to communicate with people, freely talk to them. What are your concerns? Listen to them. So it's about communication. It has nothing to do with the age in terms of that, number of years and so on and so forth. What are the strategies that do you recommend for the students to maintain a healthy life balance between online and offline life in the digital area? What are the strategies? First of all, they should devote some time for the inner journey of life. Once you are fulfilled, once you are happy, once you are joyful from inside, only then you can spread happiness. जब तक अपने से ही दोस्ती नहीं है तो दुनिया से क्या दोस्ती करोगे? खुद ही को नहीं पहचाना तो दुनिया को क्या पहचानोगे? So I leads to illness and we leads to wellness. So the more you are attached to the I, the more miseries come in life. If you embrace the entire world as one family, one world, one family, one earth, one family, one future, the more you broaden the horizon of life and embrace the entire world, all these things become very small in life. So that can only happen once you have gone through that process of inner journey of life, discovery of life and all that, discovery of your own self. So Ashtanga Yoga could be a good starting point that you start pursuing. Ashtanga Yoga सुना है ना आपने जो है यम नियम आसन प्राणायाम सुना है ना ये सब जो है तो वो सब करके समाधि तक की स्टेज होती है उसमें क्लास जो है और समाधि के आगे भी हैं स्टेजेस लेकिन अगर वो डेली लाइफ में प्रैक्टिस करने लग जाओगे आप लोग जो है तो आई से वी की जर्नी इलनेस से वेलनेस की जर्नी शुरू हो जाएगी जो ठीक है ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर देयर बिकॉज यू हैव नॉट वर्क टुवर्ड्स मूविंग अप इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन योर लाइफ सो इफ यू मूव टुवर्ड्स दैट गोल ऑफ एनहांसिंग योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल दीज मटीरियल वर्ल्ड थिंग्स विल बिकम स्मॉलर फॉर यू कहते हैं ना इस लाइन को छोटा करना है बिना उसे छुए without touching this line you have to make it smaller so you create a bigger line. That line will become automatically small. So FOMO is because you do not have vision of life. What do you want to become in this? Why you are on this planet? Who you are? So like I say 5 questions. Who am I? Why am I here? Where I want to be? How I want to be there? How I want to be remembered in this world? If you answer these small 5 questions, nothing will touch you in life. If you know what is your vision and mission of life,
then you know how to move forward in that. So all these problems arise because you do not have a bigger mission in life or vision in life. So first answer this question, why you exist on this planet. What is your divine calling to do? And then you will start giving 100% in what you do. So your body is very precious, maintain it. So do work on your body, make it sure that you don't fall sick anytime in your life. And then only you can contribute in this world to make this world a better place to live. फोमो नॉर्मली क्या होता है कि आपके दोस्त के घर में पार्टी है बट आपको ऑफिस जाना है. अब आप ऑफिस जा रहे हो बट आप खोल के बार बार अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहे हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या वो एंजॉय कर रहे हैं, क्या वो डांस कर रहे हैं, क्या वो ड्रिंक कर रहे हैं, क्या वो डिनर कर रहे हैं. तो ये जो बैक ऑफ माइंड, आप अपने काम को भी प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाते हो. तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो एक पर्सनैलिटी आपके अंदर डेवलप होती है, एक तो वो होती है कंफ्यूजन. वो इंसान हमेशा कंफ्यूजन स्टेट में रहेगा. सेकंड जो रहती है वो रहती है इनसिक्योरिटी लूजिंग द पीपल, इनसिक्योरिटी लूजिंग द रिलेशंस, इनसिक्योरिटी लूजिंग द वर्क एंड अपॉर्चुनिटीज. एक इनसिक्योरिटी बैक ऑफ माइंड उस इंसान के हमेशा चलती रहेगी. थर्ड, वो इंसान बहुत इरिटेटिव हो जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा, उसको बहुत ज्यादा एंगर आएगा. और इन सब चीजों से बचने के लिए वो किसी ना किसी एडिक्शन का सहारा लेगा. तो फोमो आपको फायदा कहीं पे भी कुछ भी नहीं दे रहा है. दोस्त ने पार्टी दी है, जब नेक्स्ट टाइम दे तब आप उसको जाके एंजॉय कर सकते हैं. बट अभी एट प्रेजेंट आप जिस जगह पे हैं और जहां पे रहना चाहते हैं और जहां पे आपकी वाकई में जरूरत है या जो काम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनस्पत किसी जगह को मिस आउट करने से बेस्ट है आप उस जगह पे रहिए, अपना 100% दीजिए और अपनी पर्सनैलिटी को और अपने काम को किसी भी तरीके से इफेक्टेड ना होते हुए, किसी भी तरीके से प्रभावित ना करते हुए वहां पे अपना 100% दीजिए. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की जो लाइफ होती है कि हम किस तरीके से उसको बैलेंस कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज हमारी हो सकती है. तो सबसे पहले तो मैं सबसे एक ही चीज कहूंगी कि जो ऑनलाइन जो चीजें होती है या फिर जो सोशल मीडिया है वो एक तरीके से झूठ है. तो हमें सबसे पहले ये रियलाइज करना है कि हमें उस झूठ को कैसे फेस करना है या हमें उस झूठ को कैसे बाहर निकलना है. जब तक आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज डिसाइड नहीं करेंगे, आपको ये लगता है कि अच्छा आपको व्हाट्सएप खोल के देखना है बार बार, या इंस्टा देखना है, फेसबुक देखना है, या स्नैप चेक करना है, आपको ये स्नैप भेजना है, अगर ये चीजें आपकी प्रायोरिटी रहेगी तो आप अपनी ऑफलाइन लाइफ को कभी भी, अपनी रियल लाइफ को, रियलिटी को कभी भी आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, कभी भी उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे. तो जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी आपकी ये होती है कि अपने काम को और अपनी चीजों को मैनेज करके चलिए. कि आपको एक प्रॉपर तरीके से उस तरीके से शेड्यूल बनाना होगा कि आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आप अपने लिए क्या प्रोडक्टिव कर रहे हैं. जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देंगे और आपको ये लग रहा है कि बार बार सोशल मीडिया पे बार बार फोन को ना चेक करने के बावजूद भी आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपको चीजें मैनेज करनी आ जाएगी. आइदर आपको एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ में जाना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ के साथ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऐड करनी पड़ेगी, आपको अपनी हॉबीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपनी हेल्थ के ऊपर, आपको अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, आपको अपने इमोशनल हेल्थ के ऊपर एंड सोशल हेल्थ के ऊपर, हर चीज के ऊपर आपको पर्सनली ध्यान देना होगा और काम करना होगा. तभी आप अपनी लाइफ से ये जो रील वाली जो लाइफ होती है, जो एक मीडिया वाली या ऑनलाइन वाली लाइफ जो होती है, उसको थोड़ा सा साइड में कर सकते हैं. और सबसे पहले ये आपको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना होगा कि ऑनलाइन वाली जो लाइफ है या जो एप्स वाली लाइफ है वो पूरी तरीके से झूठ है. किसी ना किसी का बिजनेस हमारे ऑनलाइन जाने से चलता है. तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करिए कि वो आपको कितना नुकसान पहुंचा रही है, कितना डैमेज कर रही है. जब आपको अपना नुकसान समझ में आएगा तो आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. We are truly enriched by the invaluable insights shared by Sir, who generously imparted wisdom on navigating the realms of social media and overcoming the grasp of FOMO. In the realm of guidance, a seasoned counselor holds unparalleled expertise, and our esteemed ma'am artfully shared a transformative approach, offering a tapestry wisdom on navigating challenges. To strike a balance between FOMO, fear of missing out, and social media, it's crucial to prioritize real life experiences over virtual ones. Limit screen time, cultivate meaningful connections offline, practice mindfulness, and remember that curated online content doesn't define your worth. By consciously managing your digital presence and embracing the present moment, you can mitigate FOMO and foster a healthier relationship with social media.